Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with 400 MCQs of romantic period. 400 MCQs of romantic period. Dear friends, I have completed from question number uh, 1 to 161 in part 1 to 7. This is the eighth part dear friends. यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन यूजफुल लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 162। ब्राइट स्टार बाय कीट इज एन। जो ब्राइट स्टार है कीट के द्वारा लिखा हुआ है वो क्या है? तो ऑप्शन ए बैलेड, ऑप्शन बी एपिस्टल, ऑप्शन सी एलेजी एंड ऑप्शन डी सोनेट। सो ऑप्शन डी सोनेट इज द करेक्ट आंसर। सोनेट इज द करेक्ट आंसर। yes, option D sonnet is the correct answer. Now question number 163. In Endymion, Keats attack on the option A metaphysical poetry, option B pre-Raphaelite poetry, option C new classical poetry, option D Johnsonian school of poetry. So option C new classical poetry is the correct answer. New classical poetry is the correct answer. Now question number 164। क्वेश्चन नंबर 164 जो है वो कहता है, क्या है क्वेश्चन नंबर 164? इंडेमियन इन ग्रीक मिथोलॉजी इज ए ब्यूटीफुल। इंडेमियन इन ग्रीक मिथोलॉजी इज ए ब्यूटीफुल। इंडेमियन जो है ग्रीक मिथोलॉजी में क्या है? एक सुंदर सा। अ वर्ड, ऑप्शन बी शेफर्ड, ऑप्शन सी लेडी एंड ऑप्शन डी deity. So which one is the correct answer? The correct answer is option B shepherd. Shepherd is the correct answer. Question number 165. Keats Macbeth Italian romance in Ottava Rima superficially similar to Hunt's work but with a sensuous complexity of Keats' own age. Option A Isabella, option B Hyperion, option C Lamia and option D Endymion. So which one is the correct answer? Option A Isabella is the correct answer. Now question number 166। क्वेश्चन नंबर 166 है, अ मेडिएवल रोमांस फ्रेगमेंट इन स्पेंसरियन स्टेंजा रिटन बाय किड्स इन 1820 इज ए। A medieval romance fragment in Spenserian stanza written by Keats in 1820 is A. Option A Lamia, option B Isabella, option C The Eve of the Saint Agnes and option D Hyperion. Hyperion. So question, the correct answer is option C The Eve of the Saint Agnes. Question number 167. Which of the following is not a work of John Keats? Which of the following is not a work of John Keats? Option A Human Seasons, option B Ballads of Passion and Mirth, option C When I Have Fear That I May Cease to Be, and option D Hymen to Intellectual Beauty. Hymen to Intellectual Beauty. So which one is the correct answer? The correct answer is option D, a hymen to intellectual beauty is the correct answer. Now question number 168। क्वेश्चन नंबर 168 जो है, which of the following work of Keats is a narrative romance composed in pentameter couplet? Which of the following work of Keats is a narrative romance composed in pentameter couplet? जो पेंटामीटर कपलेट में है वो कौन सा है कीट का नरेटिव रोमांस? ऑप्शन ए ब्राइट स्टार, ऑप्शन बी ह्यूमन सीजन्स, ऑप्शन सी लामिया एंड ऑप्शन डी ओड टू ऑटम. Ode to Autumn. So which one is the correct answer of 168? Option C Lamia.
Option C, Lamia is the correct answer. Now question number 169. 169. Isabel by John Keats is based on. Isabel by John Keats is based on option A, Boccaccio, Decameron, option B, Shelley's Adonais, option C, Aeschylus, Purcell, option D, Milton's Lycidas. So option B, Sally Adonis is the correct answer. And Isabel by John Keats is based on Sally's Adonis. Now question number 170. Where youth grows pale, spectre, thin and dies. This line refers to. किसको ये लाइन रिफर की गई है? ऑप्शन ए जॉर्ज, ऑप्शन बी टॉम, option C John and option D Wordsworth. So which one is the correct answer? Option B Tom is the correct answer. Now question number 171. Who is Elias of Charles Lamb essay of Elia? Who is Elia of Charles Lamb's essay of Elia? Option his friend, option B an imaginary figure, option C an Italian clerk with whom he worked in the South Sea House, and option D his patron. His patron. So option C is the correct answer. Option C, an Italian clerk with whom he worked in the South Sea House. Question number 72. Essay of Elias first appeared in option A London Magazine, option B Edinburgh Review, option C the Black Boots Magazine, and option D the Quarterly Review. The Quarterly Review. So which one is correct answer? Option A London Magazine is the correct answer. Now question number 173. Question number 173. Sally wrote his tales from Shakespeare at the suggestion of. Sally wrote his tales from the Shakespeare at the suggestion of. Option A Leigh Hunt, option B De Quincey, option C Coleridge, and option D Godwin. So which one is the correct answer of 173? Option D Godwin is the correct answer. Now question number 174. Who does Lamb describe as an archangel a little damaged? Whom does Lamb describe as an archangel a little damaged? किसको इस प्रकार से संबोधित किया है? क्वेश्चन नंबर 174. ऑप्शन ए शैली, ऑप्शन बी कॉलरेज, ऑप्शन सी बर्ड्सवर्थ एंड ऑप्शन डी कीट्स. सो ऑप्शन बी कॉलरेज इज द करेक्ट आंसर. Coleridge is the correct answer. Now question number 175. Dear friends, these questions are very useful for competitive exam. तो यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन यूज़फुल लगें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए. क्वेश्चन नंबर 175. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब? इनमें से चार्ल्स लैम्ब के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया था? ऑप्शन ए इम्परफेक्ट सिंपैथीज, ऑप्शन बी द स्पिरिट ऑफ द एज, ऑप्शन सी ऑल फूल्स डे, एंड ऑप्शन डी पॉपुलर fallacies. Popular fallacies. So which one is the correct answer? The correct answer of this question is 175. Option B the spirit of the age. Option B is the correct answer. Now question number 176. Question number 176. John Woodville by Charles Lamb is A or N? जो जॉन वुडविल है वो क्या है? ऑप्शन ए ऐसे, ऑप्शन बी बायोग्राफी, ऑप्शन सी पॉलिटिकल ड्रामा, एंड ऑप्शन डी नॉवेल. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? 176 पॉलिटिकल ड्रामा. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पॉलिटिकल ड्रामा. Now question number 178. Question number 178. Who wrote character of Shakespeare's plays The Round Table, The Plain Speaker, and The Round Table?
So which one is the correct answer? Question 177. क्वेश्चन नंबर 178, जो क्वेश्चन नंबर 178 है उसके जो आंसर दीज फोर ऑप्शन है ले हंट, ऑप्शन डी क्विंसी, ऑप्शन सी विलियम हैजलेट एंड ऑप्शन डी चार्ल्स लैम्ब. सो हु इज द राइटर ऑफ Shakespeare's plays The Round Table, The Plain Speaker and The Round Table? So option C William Hazlitt is the correct answer. Now question number 179. It is the studies of the leading mind of the time, including those of Wordsworth and Bentham. Which work of Hazlitt is referred to here? यहाँ पे हैजलेट के किस वर्क की बात की गई है यहाँ पे? तो ऑप्शन ए है द प्लेन स्पीकर, ऑप्शन बी द स्पिरिट ऑफ द एज, ऑप्शन सी इन ए ड्रीर नाइटेड डिसम्बर एंड ऑप्शन डी ऑन द इंग्लिश पोएट्स. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी द स्पिरिट ऑफ द एज. स्पिरिट ऑफ द एज इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 180. क्वेश्चन नंबर 180 जो है क्वेश्चन नंबर 180. द क्रेडिट ऑफ पायोनियरिंग द हिस्टोरिकल नॉवेल इज ऑफन एट्रीब्यूटेड टू. The credit of pioneering the historical novel is often attributed to option A Godwin, option B Southey, option C Austen and option D Scott. So which one is the correct answer? Option D Scott is the correct answer. Now question number 181. Which of the following attempt at historical fiction was made prior to Scott's popularization of the genre? Option A Scottish Chiefs by Jane Porter, option B The Castle of Otranto by Horace Walpole, option C Races by Sophia Lee and option D all of the above. So which one is the correct answer? The option C Races by Sophia Lee is the correct answer. Dear friends, 4 questions are remaining. Question number 182. In which novel 182 in which 180 yes one of the following novel is written by in which of the following attempts at historical fictions was made prior to Scott popularization of the genre? ये हो गया. क्वेश्चन नंबर 182. In which of his novel Scott represented that Shakespeare died in 1590 without writing his tragedies? इन विच ऑफ हिज नॉवल स्कॉट रिप्रेजेंटेड, किस नॉवल में उन्होंने ऐसा कहा है? ऑप्शन ए वुड स्टॉक, ऑप्शन बी कैनिल वर्थ, ऑप्शन सी रेड गॉन्टलेट एंड ऑप्शन डी एबॉट. So which one is the correct answer? The correct answer of 182, the 182 option A Woodstock. Woodstock is the correct answer. Now question number 183. One of the following novel is not written by Sir Walter Scott. Identify it. वॉल्टर स्कॉट के द्वारा इनमें से क्या नहीं लिखा गया? ऑप्शन द ब्लैक ड्वार्फ, ऑप्शन बी द पायरेट, ऑप्शन सी द एंटीक्विटी एंड ऑप्शन डी कैसल रॉक रेंट. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी. 183 का जो डी है वो इज द करेक्ट आंसर. डियर फ्रेंड, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन यूजफुल लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. क्वेश्चन नंबर 184. द नॉवेल इन विच स्कॉट रिटर्न्ड in the past 17th century and the reign of Charles II is. Again question सुनिए. The novel in which Scott returned in the past 17th century and the reign of Charles II. Option A The Bride of Lammermoor, option B Old Morality, option C Antiquity and option D Ivanhoe. So which one is the correct answer? Option B Old Morality is the correct answer. This is the last question. Rebecca is a character in Scots. Rebecca is a character in Scots. Scott के
रेबेका जो है किसकी करेक्टर? ऑप्शन ए रॉब बॉय, ऑप्शन बी इवान हो, ऑप्शन सी द एंटीक्विटी एंड ऑप्शन डी द हार्ट ऑफ मिडथियन. So which one is the correct answer? Option B, Ivanhoe is the correct answer. Thank you for watching this video, dear